स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजी के बहुत अच्छे गुरु निशांक मेहता। Everybody that I have heard gives a lot of importance to the birthday, but life path defines your life's purpose. कि अगर किसी का लाइफ पाथ 1 है उसका क्या मतलब होगा? So life path 1 is all about being a leader. लाइफ पाथ 5 के बारे में 5 has the capacity to sell ice to an Eskimo going inside the igloo. वाओ 5 is all about using your words so strategically that you can sell any idea, any product, anything to anybody. And the greatest example of a 5 is our respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi. एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड नंबर की मेरे अकॉर्डिंग विच इज नंबर 8। 8 is ruled by Saturn. और एस्ट्रोलॉजी में जो 7.5 बोलते हैं, these are very very misunderstood. It's only seen as doom. It is not like that. 8 is the most powerful number in all the 9 numbers. वाओ My approach to numerology it comes with a lot of infusion of metaphysics into it. कि ये numbers के जो vibrations है, की जो energy है, वो हमारे mind को कैसे impact करती है. And I will say with a lot of confidence कि ये work करता है. And I've helped number of people to bring those changes and see the growth that they want to see. हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ विद सिंपली पंकज। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है और आज हमारे स्टूडियो में एक जादूगर आया है। जादूगर शब्दों का, जादूगर नंबरों का, और अगर आपका नाम ही निशांक हो तो आप नंबरों से कैसे दूर रह सकते हो। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजी के बहुत अच्छे गुरु निशांक मेहता। तो जानते हैं उनसे अंक और अंक शास्त्र के बारे में। वेलकम टू द स्टूडियो निशांक। Thank you, Pankaj, for having me here. It's lovely to be here. And thanks for the lovely introduction. I don't have to say much about me, and you'll know more about me as we progress, as we get into the episode. मैं जब भी कोई भी सेशन शुरू करता हूँ, कोई भी कंसल्टिंग सेशन और anything I begin, I love to begin with a few lines of prayer. So is that okay if we do it together? Please go ahead. All right. So this is a prayer from this book called Course in Miracles. It's the Healer's Prayer, and it goes like this. We are here only to be truly helpful. We are here to represent a higher power who sent us here. We are the mediums to that. We do not have to worry about what to say or what to do because that same higher power will guide us all through the time. And we are content to be wherever we are, in whoever's presence we are in, whoever is listening to this podcast, knowing that higher power has sent them and is with us all the time. And as we help healing happen through us, parts of our lives will be healed as well. And so it is. ये तो बहुत ही पीसफुल से स्टार्ट कर दिया यार आपने एकदम। मुझे तो लग रहा है मैं स्पिरिचुअल सेशन में आऊँ, न्यूमरोलॉजी की बात कैसे करूँ अब मैं। So numerology का मेरा approach is very different, very unconventional. I call it metaphysics and numerology. Metaphysics is एक modern शब्द है, spirituality को replace करता है, या it's a synonym to it. The moment इंडिया में क्या है, आप जब भी spirituality की बात करो तो सब लोग को लगता है ऐसे बाबा बनकर बैठने का. That's not the true essence of spirituality. It's about mind training. And that's why I use the word metaphysics. Meta is mind, physics is a science. So basically it's science of the mind. And जो न्यूटन का third law है, just replace the word action with thoughts. That's what metaphysics is all about. To every action there is an equal and opposite reaction. Yes. So to every thought, that's the same. And my approach to numerology it comes with a lot of infusion of metaphysics into it. कि ये numbers के जो वाइब्रेशंस है, की जो एनर्जी है, वो हमारे माइंड को कैसे इम्पैक्ट करती है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस योर माइंड एंड हाउ योर थॉट प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू दैट. वाओ एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, आई यूज न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी टू क्रिएट अवेयरनेस. अवेयरनेस इज 80% of the job. And I trust that every client, every person, like if you're sitting in front of me, you are very intelligent and you exactly know what you have to do in life. My job is to just make you aware. This is how it is. This is what it is.
and the rest will happen. And मेरा भी स्टोरी न्यूमरोलॉजी में ऐसा ही था, कंप्लीट नॉन बिलीवर। रादर मुझे ऐसा लगता था ये सब होकी पोकी है। और मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी था वाज दीज सीरियल्स जो आती थी, कहानी घर घर की, यू नो देयर इज एन एक्स्ट्रा आई और एक्स्ट्रा के। Yeah. There was a serial called Kusum which had an extra, it started with 2 Ks. I used to always wonder कि ये क्या चल रहा है, you know, what is this? And my curiosity led me to understand that this is done using a science called numerology. And I was like, ऐसे एक लेटर ऐड करने से थोड़ी ना किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, कुछ भी तो एक्चुअली लाइफ चेंज होती है एक लेटर ऐड करने से? होती है। क्या बात कर रहे हो? Yes, 100% होती है। And I will like say with a lot of confidence के होती है, because I started with completely feeling that this doesn't work. It's just a show or it's just a way to promote this thing and superstition है, ऐसा सब है। My journey started from that there. But क्या है ना, when you learn the subject scientifically, जब आप डेप्थ में समझते हो तो लॉजिक समझ में आता है कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स। एंड आई विल से विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये वर्क करता है। एंड आई हैव हेल्प्ड नंबर ऑफ पीपल टू bring those changes, bring those alterations in their life and see the growth that they want to see. जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है। हम जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं या अंक शास्त्र की बात करते हैं, वो कितने टाइप का होता है? So numerology 28 schools है of numerology. I call Wow. it schools of numerology. उसमें से 5 are practiced widely. So one of them is Vedic numerology, which is थोड़ा astronumerology के तरफ जाता है, थोड़ा planets भी उसमें आ जाता है, and it's very deep, but not very widely practiced. Second is Chinese numerology, which is also very famously known as Loshu grid. बहुत फेमस है इंडिया में, इट्स गेन पॉपुलैरिटी इन द लास्ट 3-4 years. आई डोंट कॉल इट कंप्लीट न्यूमरोलॉजी बिकॉज उसमें नाम का कोई काम नहीं है, और न्यूमरोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बर्थ नंबर्स एंड योर नेम नंबर्स। ओह! एक्चुअली दैट्स हाउ न्यूमरोलॉजी इज। ये मेरे लिए बहुत नई इन्फॉर्मेशन है कि आपके नाम का आपके जन्म के नंबर से लेना देना है। ऑफ कोर्स बहुत लेना देना है। लाइक फॉर एग्जांपल, एज वी गेट डीपर इनटू द कॉन्वर्सेशन, तो एक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें एक बर्थडे नंबर होता है। नाउ पूरी दुनिया is harping on birthday number. Like I am born on 21st, तो my number is 3, तो ये मेरा नंबर है। Well, the birthday number उसका एक महत्व होता है, उसका एक importance होता है, but the most important number is the total of your date of birth, which is called the life path number. My date of birth is 11 Feb 1982. Are you serious? Yeah, indeed. आप Seriously? लाइसेंस चेक कर लो यार मेरा। I am 11th February 1980. क्या बात कर रहे हो? आप एग्जैक्टली 2 साल बड़े हो मुझसे। Exactly. And this can't be a coincidence, because me being here is okay. Let me explain this to you. Okay, so first let's take your birthday number, which is 11. So सबसे पहले conventional numerology होती है, वो 11 को 2 पे लेके आती है। करेक्ट। We don't do that. Okay, 11 remains 11. So there are 3 numbers such, which is 11, 22 and 33. They remain the way they are. So we don't break them down to a single digit. इसके पीछे एक बहुत बड़ा महत्व है, which I will explain you very scientifically what it means. आप कुछ पूछ रहे थे वर्ड। नहीं, मैं यही इसी चीज को कंटिन्यू करूँगा। So when you say 11th February, सबसे पहले तो like मेरा एंटेना खड़ा हो गया, I am 11th February born myself. And 11, 22 and 33 इसको मास्टर नंबर्स बोलते हैं। All right. And what are master numbers? Master numbers are a collection of blessings from many different lifetimes. वाओ! Previous lifetimes में आपने कुछ ऐसा करा है where you've collected lot of, बहुत दुआएं आपने इकट्ठा की है, बहुत लोगों की blessings आपने इकट्ठा की है, and a culmination of those blessings you gives you either a 11 or a 22 somewhere, or a 33 somewhere in your birthday or your name numbers. वाओ! ऑलराइट, बर्थडे में तो 33 नहीं आ सकता है, बट इट कैन कम इन द नेम और इट कैन कम इन द लाइफ पाथ नंबर। एंड पीपल विथ 11, 22, 33 दे कैनॉट टेक दीज नंबर्स लाइटली। इसका एक बहुत हैवी, बहुत भारी क्या बोलते हैं,
it's a heavyweight number, and you cannot take it lightly. A lot of responsibility comes later, but you cannot take it lightly. Now let me get into the science of it. 11 is the number 11, which has got two ones, and it totals to a 2. So all master numbers में क्या होता है, you have to not only consider the 2, but you have to even consider the 1. Yeah. So to give you an analogy, I'll give you an analogy of a Oreo biscuit, cream biscuit बोलते हैं हम जिसको इंडिया में, right? तो उसमें 2 बिस्किट होती है और बीच में क्रीम होता है, Correct. right? So the 2 ones are those 2 biscuits. Oh. So 2 ones means the outer self is all about the quality of a 1, and the number 2 to which the 11 totals, that's the cream. So that's what who you are from inside. Very interesting. So 1 is all about extrovertedness, and you are leader, and you want to call the shots, and you want to lead from the front, and दुनिया हरा देंगे और दुनिया जीत लेंगे kind of an attitude. Whereas at 2, 1 is ruled by sun, so it's aggressive naturally. Whereas 2 is ruled by the moon, so it's sensitive. And a moon is all about the warmth that you have and very accommodative. Like, आप जिधर भी जाएंगे, people will feel so comfortable in your presence, even if they are meeting you for the first time. Like me, I'm meeting you for the first time, and I already feel that I know you since ages. हम पिछले जन्म में मिले, मुझे तो शक हो गया अभी. और स्पेसिफिकली जब आपने बोला 11th फरवरी है, अभी उसका मैं समझाता हूँ क्या है. नाउ मास्टर नंबर्स, आई कॉल इट, इट्स अ वेब. It's a web where a master number will always encounter another master number in some form or the other. या तो आपका फैमिली में कोई मेंबर होगा with a master number prominent, or your closest friend, or your mentor, or somebody who is influencing your life deeply. कहीं ना कहीं आपको एक मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा. My mother is a number 2. Second It has to be a 11. No, it has to be a 11 Oh. or a 22 or a 33. And it can come in any form. It can be birthday. Someone born on 29th is also 11. Because 29 totals to 11, we stop at 11. Or somebody's total of the date of birth, so which I will get to. So ये एक web है. And all master numbers encounter master numbers somehow. And ये क्यों जरूरी है? Why it's designed like this by the cosmos is because it's very tough to have these two extreme energies in one being. Imagine you have the energy of sun and moon both in you. So if you go back to the initial years when you were growing up, आपके लिए बहुत difficult होता होगा to handle these two energies, and you don't know what's happening. So you could be extremely aggressive, you could have bouts of aggression, and there will be bouts of depression also. Like you are completely inward and you don't know what is happening, you don't know what to do, you are sacrificing yourself for the world in order to accommodate everyone, and then suddenly one fine day you are like, I don't care about anyone, I want to. तो ये जो duality है ना 11 की, is very difficult to handle. And as growing up children, share about yourself, but I was a very difficult child to raise. I came to know after I studied the number 11. My God, I was a terror to my parents. So I was a very sweet child, more of a moon than the sun. Yeah. good. Then your parents were fortunate. My batchmates in school still tease me by calling me the best student, because कहते ना जो बच्चा रैंक 1 to 3 में नहीं आता था उस जमाने में, लेट 80s अर्ली 90s, उसको बाय डिफॉल्ट बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता था. कि भाई तो आज की तारीख में मेरा बेटा कहता, पापा नो डोंट कॉल मी अ बेस्ट स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर्स पेट, बट आई वाज अ टीचर्स फेवरेट लव्ड. या. Wonderful. So that's the two that is amplifying itself, and right now doing this podcast and doing this is the one that is amplifying itself. So this cannot be taken light. Secondly, now every master number has its own peculiarity, has its own function. So 11 is all about spiritual masters. तो 11 का काम होता है to raise mass consciousness, not 1 or 2 people or 5 or 10 people. It's about mass consciousness. One example of 11 I'll give you is Osho. Another example I'll give you is Tony Robbins. He is a global life coach. Now Tony Robbins का जो मुझे birth date मिला है, that is, he is born on 29th, and the total of his date of birth is also 11. Wow. So birthday is 11, life path is 11. So 2 11s, and exactly this is what he's doing. He's raising mass consciousness. At the same time, he's so aggressive in his approach. दिल में है इसका लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, इसका कुछ अच्छा करना है, बट द अप्रोच इज सो
aggressive, you know. Hmm. So this is the 11, and this is what its function is. Amir Khan is 11 life path. Oh wow. So अगर आप उनकी movies भी देखोगे, तो they are Around trying to transform the world. transform or pass on a very deep message to someone or to masses. तारे जमीन पर को तारे ज़मीन- तारे जमीन पर For देखो. that matter, Three Idiots. Yes. What a beautiful message was embedded in that movie. I mean, It reminds me कि उन्होंने मेला नाम की एक पिक्चर की, तो उसमें क्या मैसेज था? वो मैंने देखी नहीं है. मैं बताता हूँ, वो किसी ने भी नहीं देखी. उसका यही मैसेज था कि हर पिक्चर जो आमिर खान बनाते हैं देखनी जरूरी नहीं होती है. That's a good one. That's a good one. तो मुझे ये बताओ कि 11 फरवरी 1982 के अकॉर्डिंग मेरा पाथ जो भी नंबर्स हैं वो क्या है मेरे लिए? Yeah. So आपका बर्थडे नंबर 11 है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. Now बर्थडे नंबर क्या होता है? बर्थडे नंबर is the gift that you are born with. ओके. Okay. When you total your date of birth, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 11th फरवरी. सो 11 + 2 is 13. सो 11 को हम तोड़ते नहीं है 2 पे, तो 11 11 वैसे ही रहता है. तो 11 + 2 is 13. And then you total 1982, that will come to 20. So that becomes 2. So 13 + 2 is 14 and 1 15. 15 totals to a 6. 6. तो आपका लाइफ पाथ नंबर is 6. This is the most important number in numerology. ओके. The most important number, and everybody that I have heard gives a lot of importance to the birthday, but actually the most important number is this. जैसे आप बर्थ डेट की बात कर रहे हो, उसको हम हिंदी में मूलांक कह रहे हैं, और जो आप लाइफ पाथ की बात कर रहे हो उसको भाग्यांक कह रहे हैं कि आपके भाग्य का अंक क्या होने वाला है. Exactly. करेक्ट. ओके, प्लीज गो अहेड. So life path defines your life's purpose. So every soul, we are a soul who has taken form of a body, and we are born on this earth, and then we are living our life. But वो soul का इस lifetime में एक purpose है, ओके. जो उसको पूरा करना है before you go on to your next adventure. तो वो पर्पस क्या है, ये बर्थ डेट का भाग्यांक बताता है, which is what we call as a life path number or your life's purpose number. Some people call it destiny number. बहुत सारे नाम है उसके. I call it your life path number, or this is your life's purpose. This is the central theme of your life. तो अगर जो भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए जो रील्स देखता हूँ, वो मेरे मूलांक की बात कर रहे होते हैं या मेरे लाइफ पाथ की बात कर रहे हैं? ज्यादातर मूलांक की बात करते हैं. ओके. तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि अगर किसी का लाइफ पाथ 1 है, उसका क्या मतलब होगा? लाइफ पाथ 1 जिसका होता है, वो बहुत रेयरली किसी के अंडर काम कर सकते हैं. दे कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर ऑफ समवन. देयर जॉब इज टू बी देयर ऑथेंटिक सेल्फ. They have original ideas, extremely creative. They love doing trial and error. That is who they are. So they will never be able to keep reporting all their life to someone. ओह. Okay, so that's not their soul's purpose. So let's say किसी ने जॉब ले ली और वो इनसिक्योरिटी में वो जॉब को पकड़ के रख रहा है. इफ यू आस्क इंटरनली दैट पर्सन, उसका दम घुट रहा होएगा वो जॉब में, और वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा until and unless he gets promoted to a level of a CEO or very high post in a, भले नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, but it's where you are calling the shots. अमेजिंग. So ऐसा नहीं है all life path 1 are only doing business or only entrepreneurs. Majority of them are, but those who are doing job, they will be at a very, very high post. I'll give you some example of a life path 1, Steve Jobs. ओह. Okay, so very strong. He's like, let's disrupt the world. या. All right. Who is that actor? Mission Impossible. टॉम Tom Cruise. So if you see all his stunts, he does. He gets trained, he will do it. This is life path 1. मैं कुछ impactful करके दिखाऊंगा and I will call the shots. अब हम बात करते हैं लाइफ पाथ 2 की. So life path 2 का काम है is diplomacy. Okay, they are extremely diplomatic, very, very kind. Moon energy, so sensitivity levels are very, very high. Great empaths, very, very good, very empathetic people. Sometimes very sympathetic also, and very, very sensitive, but very diplomatic. So a lot of these consulate generals or in those they will have somewhere a very prominent 2. ओह. And 2 is all about peacemakers, all about वो बोलते हैं ना समझौता करवाना. All right, what is the word? I'm not getting the word. Let come to me. So it's all about creating a win-win situation. द अगर नेगोशिएटर. आप, yeah, the negotiator. अगर आप
दो जन हो, अनबन हो रही है, वेट वेट वेट, द टू विल कम एंड विल से क्या है तेरे को, क्या प्रॉब्लम, तेरे को क्या, एंड देन ही विल ट्राई एंड bring come to that middle ground where both are winning and both are happy. So सुलह करवाना, सुलह करवाना। something like that. और नंबर 3 लाइफ पाथ की कहानी बताओ। 3 life path is all about 3 जहाँ पे भी आया ना, आप इमेजिन करो एक टॉडलर को, okay, it's a child's number, it is ruled by Jupiter and very happy go lucky, and 3 is of all the numbers is the most creative number. ओह वाह! 3 is all about creative expression. So you will find and very inspirational people. So wherever with they will go, ऐसा समझो कि 3 नंबर में एक मैग्नेट आता है. ओह! If they go into a social gathering, after some time you'll find कि उसके इर्द गिर्द पूरा crowd जम गया है. So they are the crowd pullers. Very inspiring. APJ Abdul Kalam has, I think, a prominent 3. His life path number is 3. And you'll find many people in the acting world, in the creative world, with a life path 3. We have celebrities like Kareena Kapoor, who is a life path 3. You also have this guy who is a life path 3. The news reporter, Republic अर्नब। Arnab. He's a life path 3. So threes, they have to communicate. They are the communicators. They have to communicate. They have to be creative. They have to express themselves. कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना एक्सप्रेस करते हो कि दूसरों को नहीं करने देते. That's a different story, but that's what a life path 3 is all about. Inspire people through their creative expression. So you mean to say Arnab could have been a great actor and Kareena could have been a great reporter? We don't know if he's acting right now also. Let's talk about life path 4. So life path 4 number is ruled by Uranus. As per the Pythagorean or the Western numerology, आप कोई वैदिक में पूछोगे तो there is a debate, उसको 4 और 7 को राहु केतु से जोड़ा जाता है, but we call it ruled by Uranus. Uranus is the number 4 is all about strength. It's all about building a foundation. Number 4, I relate to, that moral of the story, hare and tortoise. Slow and steady wins the race. That's what a life path 4 is all about. Very hardworking people, extremely honest, very integrity is very high on them, on their life, and they are Mr. Dependable. So if you're running an organization and you have your, let's say, your general manager or your key person with a life path 4, आप घर पे आके सो जाओ. Wow. You have to just tell that this has to be done. It has to be delivered at that time. You come on that day and it will be ready. Wow. So 4 is all about that. They are very practical people, very high on pragmatism, and they are very left brain oriented. मतलब 4 को 3 को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. अरे भाई तू आइडियाज मत बोल, मुझे बोल एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. So 4 is all about taking steps, going very methodically, एंड उनका लाइफ का पर्पस होता है इज टू बिल्ड समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू which is there functioning even after they are not there. Wow. So that's their life's purpose, that's their soul's purpose. They are great teachers because they know how to methodically break things down very well. I speak a lot about it because my life path is a 22 which totals to a 4. So I know this and like punctual, very punctual people, and they hate it when किसी ने अगर उनको टाइम दिया और वो आ नहीं पाए या वो डिलीवर नहीं किया, दे स्टार्ट लूजिंग देयर शिट. सो दैट दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ लाइफ पाथ 4 एंड दिस इज देयर फंक्शन. आपके अलावा और कोई फेमस नंबर चावल? नंबर 4, you have Oprah Winfrey. Oh. Oprah Winfrey is a 4, a prominent 4. You have Donald Trump as a prominent 4. Very interesting choice. But there is a difference. So जैसे मास्टर नंबर्स होता है, वैसे there is something called as karmic debt numbers. Okay. So when the 4 is derived from a 13, जब आपकी भाग्यांक 13 होता है और उसमें से 4 आता है, then that's a little different. The interpretation is different. So when the 4 comes from a 13, and the life path is 13 by 4, it's a very confused energy. Okay, there is a lot of confusion around your career. Even if you will see Mr. Trump's history, he's gone bust. 2-3 businesses have not done well, but slow and steady wins the race.
great at manifestation, so you eventually get there. Okay, what you do after. So I'm giving you two very extreme examples of the number 4. One is who is an inspiration to the world. The other, I don't know what he is, So one is you, the other is Donald Trump. if you say so. So we can see both the extremes of So yeah, 22, yeah, 4 में master number 22 भी होता है, karmic debt number भी होता है, and 4 comes from a 31 also. Total can be 31, which also leads to a 4, which will have all the qualities of a 4. 22 will have 2 and 4 together, and 13 by 4 they have their own journey. 13 by 4 में क्या होता है कि work hard, but you have to work lot more harder to get the desired result. If somebody has to put in 80 units of hard work to get 1000, then somebody with a 13 by 4 will have to put in 200 units of hard work to get the same wow. result. So that's the difference. And थोड़ा डिले भी होता है. Like आपने प्लान किया है कि ये डेट को ये हो जाएगा, तो वो 4 जब 13 में से आता है उसको थोड़ा few months, few weeks more, थोड़ा डिले जाएगा. वो तो मुझे दिख रहा है, मैं न्यूज जितनी बार पढ़ रहा हूँ वो बार बार ट्रम्प अंकल डिले किए जा रहे हैं. तो दिस आई एग्री विद राइट ना. सर अब आप मुझे बताओ लाइफ पाथ 5 के बारे में. So life path 5 is a magnified version of a 3. So जो भी मैंने आपको 3 के बारे में बताया, all applies to a 5 and plus plus. So 5 is a very versatile number, very dynamic number, and it's all about growth. बस मुझे उड़ना है. And life path 5 is all about freedom. They love freedom. You cannot box them. Or you cannot put them, let's say you have got you are running a company. Oh, this is interesting. You're running a company and you have 2 CVs. Okay, एक आपको एम्प्लॉय करना है किसी को फील्ड वर्क के लिए, मार्केटिंग, सेल्स. 5s आर अमेजिंग एट मार्केटिंग एंड सेल्स. और एक आपको एक रखना है अकाउंटेंट या ऐसा कोई काम जो डेस्क जॉब है. नाउ टेक अ लाइफ पाथ 5 एंड पुट हिम ऑन अ डेस्क जॉब. 1-2 months, 3 months max, उससे ज़्यादा टिकेगा नहीं आपके पास. They won't stick to you. Take a 4, give him a field job. थक के आ जाएगा भाई. मेहनत है तो मेहनत तो कर लेगा, बट वो मार्केटिंग और सेल्स नहीं कर सकते 4 बहुत ज्यादा, बिकॉज दे आर टू स्ट्रेट फॉर द वर्ल्ड. 5 has the capacity to sell ice to an Eskimo going inside the igloo. वाओ. उसमें वो कैपेसिटी है, वो कुछ भी बेच सकता है. Okay, so 3 is all about communication. 5 is all about using your words so strategically that you can sell any idea, any product, anything वाओ. to anybody. And the greatest example of a 5 is our respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is a life path 5. He is born on 17th of September. 17 is a 8 and life path is 5. And it's 5 that doesn't come from a 14. So again, 13, 14, 16 and 19, they are all karmic debt numbers. So 5 coming from a 14 is a different story, and a 5 that comes otherwise is a different story. So if you go to see his speech, his words are so powerful. या He sold the entire nation. He sold the idea of a lockdown to the entire nation, and the entire nation took it in stride. उनका एक वर्ड जब उन्होंने माइक पे आके मित्रों बोला ना, आप समझ जाओ कि अनाउंसमेंट आने वाली है, और वो एक शब्द से ही दुनिया हिला सकते हैं एक्चुअली. And 5s are दुनिया हिला सकते हैं, they are reformists. या उन लोग का काम है, what is the routine that is going on, उसको बंद करो, कुछ नया लेके आओ और कुछ बेहतर करो, कुछ बड़ा करो. And they are very growth oriented people. विकास, they love it. They cannot sustain if there is no growth. तो डिमोनेटाइजेशन तो होना ही था फिर आपके अकॉर्डिंग. होना है. नंबर 6 की बात करते हैं. So 6, that's your life path. So 6 is a number of a visionary and of a nurturer. So अगर आप 6 as a number भी देखोगे, psychology of numbers में अगर जाए, तो if you look at a 6 and if you look at a to be mother bearing a child, ओह is the same shape, नाइस. right? So a mother who is a lady who is about, a woman who is about to become a mother, how is she? Very warm, full of nurturing. She's nurturing a child even before it is born, a life even before it is born. And uska kaam hai. So 6 is all about a visionary and a nurturer. And 6 ka kaam hai is to get the best
out of potential out of someone else. I so agree to this. Yeah. So I think Ratan Tata is, I am not sure, he is a combination of 1 and 6. Either the life path and birthday, दोनों में से एक 1 है और दोनों में से एक 6 है. So if you go to see, he's a very different type of a industrialist. जब भी फॉर एग्जाम्पल जब भी वो ताज की क्राइसिस हुई थी, तो his main focus was my people. Yeah. What do I do for them? People who have lost lives for no fault of theirs. What do I do for their families? And I remember someone had told me that in one of the board meeting after the whole thing was over, he was still not enough. He felt नहीं कुछ और कर सकते हैं क्या? Have we done enough? That's a number 6. So 6 has got lot of qualities of the 2. जैसे मैंने बोला 5 is a magnified 3. 6 has got lot of qualities of the 2 also. And the only difference is the 2 can be very moody. The 6 is emotionally very balanced. धैर्य होता है वो लोग में. And they are emotionally very like how you told me, you don't worry, you just talk to me, we'll take care of the rest. That's typically Six. a very 6 energy. Ruled by Venus. So they love luxury, they love brands, they are all about aesthetics, eye for detail. मतलब मेरे को ये चीज देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, आप देखोगे आप तुरंत बोलोगे ये जरा चेंज करिए, ठीक नहीं है. So they have that eye, it's very natural, and that's why they are very brand conscious also. Again Venus आ गया तो luxury आ गया, so overly brand conscious. Wow. So मुझे that's अपने बारे में कितनी सारी चीजें कनेक्ट करके मैं मेंटली खुश हो रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार मैं ऐसा हूँ क्या, बिल्कुल भी. the point ना, it's about creating awareness. Yeah. दो चीजें होती है. एक जब when I do the consult too, one of the two things happen. One is awareness begins, and second is where that awareness goes. So if you are on that path, वो validate हो जाता है, हाँ, I'm on the right path, and then that person can progress and go forth without hesitation. And if you are not, the awareness will help you. Okay, let me make this correction. When I learned numerology for the first time with extreme amount of resistance, I sat down at 9, sitting at looking at the 5 बज गया, मैं इधर से गया, never going to see my this teacher's face, whoever it is. And I got up transformed. I said, my God, 11, 22, 2, 4. This is what is creating problems also, and where I'm completely underutilizing myself. Wow. So that was the first year when I thought 2017, ये जॉब तो मैं नहीं कर पाऊंगा लंबा, छोड़ना पड़ेगा. सो न्यूमरोलॉजी का जो अवेयरनेस था, जो अवेयरनेस मुझे मिला, मुझे पता चला दैट ओके दिस इज नॉट माय पाथ, आई नीड टू चेंज, आई नीड टू मेक अ कोर्स करेक्शन. अब हम बात करेंगे लाइफ पाथ नंबर 7 की. 7. So 7 according to Pythagoras is it's a very spiritual number, a very high on intellect. So 7s are extremely intelligent people, but they are extremely introvert as well. 7 नंबर को मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पोकर फेस. Okay, if you know someone with a prominent 7 in your life, you will know that उन लोग को देख के आपको कभी पता नहीं चल रहा है अंदर क्या चल रहा है. They could be anxious, they could be extremely happy, you will never come to know. कुछ वो सोच रहे, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या इसका. So they are great strategists also. Greatest example of a number 7 is Putin. Oh, You will never come to know what his next move is going to be. true. So true. Right? That's a life path 7. Very strategic. उसको बराबर पता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका आउटकम क्या होगा. Even his closest aide might not know if he doesn't tell. Wow. So very intelligent, very strategic. 7 का लाइफ का पर्पस क्या होता है? So 7s have the gift of the intellect, but they also have the gift of the intuition. मुझे लगा था ये आने वाला है. जब हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, हम्म. मेरा गट ये बोलता है मेरा, तो ये क्वालिटी है ना 2 में भी होती है, 11 में भी होती है, 22 में भी होती है, बट सबसे ज्यादा 7 में होती है. और उनका लाइफ का पर्पस है इज टू टेक द हेड, टेक द हार्ट, सो टेक द इंटेलेक्ट, टेक द इंट्यूशन, bring it to a balance, and then take a decision. Wow. So when the 7 is growing up, you will find them to be on extremes. So either they will be only head oriented people,
or they will be only gut oriented people. Balance नहीं है. But over a period of time they will realize that no यार I have to इसकी भी सुननी है, इसकी भी सुननी है और साथ में एक decision लेना है. So the day they master that, they have mastered their life path. So this is all about 7. अब मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड नंबर की मेरे अकॉर्डिंग, विच इज नंबर 8. 8 and 4 both. So good you brought it up right now. I didn't mention that during 4. So I'll introduce you to one more school of numerology here, which is the Chaldean school of numerology. सबसे widely practiced इंडिया में ये है. Why? Because it's fairly simple. Pythagorean numerology और जिसको Western numerology भी बोला जाता है, it's very 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 deep and complex both. Like what I shared about master numbers, what I shared about karmic debt numbers, none of that concept is there in the Chaldean form. Chaldean में 4 and 8 are very disgraced numbers. तो जब भी कोई क्लाइंट आता है जिसका बर्थडे 8 होता है या लाइफ पाथ 8 होता है, पहले तो उसको डरा देते हैं कि भाई और ये प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल है, शनि का नंबर है, इज रूल्ड बाय सैटर्न. 7 is ruled by Neptune, by the way. Neptune is a planet that rules higher wisdom. 8 is ruled by Saturn. तो इसको है ना सैटर्न और शनि और एस्ट्रोलॉजी में जो 7.5 बोलते हैं, these are very 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 misunderstood terminologies. It's only seen as doom, gloom, doom or doomsday. Oh, your life is full of struggle. It is not like that. Okay. 8 is the most powerful number in all the 9 numbers. Wow. One of the most influential numbers in all the 9 numbers. Okay. And 8 is all about money. It's a very transactional number. अगर आप number 8 को horizontally देखोगे ना, what will you see? Infinity. It's a number of karma. It's the half truth. Yes, 8 brings trouble, but that's only the half truth. It's not always the same. I'll tell you the entire truth. What nobody speaks about. See, 8 number का जो सबसे बड़ा negative energy है, that is egotism. Okay. Now, when you are very powerful, when you are very influential, you arrived in life, you made it in life. But अगर वो success आपके सर में चढ़ जाती है, or you start looking down upon people, or you start demeaning people, or you're misusing your influence, you're misusing your power for not the right things, for selfish purposes, that's where the downfall and the struggle of the 8 happens. This is the complete truth. So it's a very transactional and it's a karmic number. So they will see only success in their life when they are using their power, when they are using their influence, when they are using their abundance, not only for their benefit. Please, आप भुगत लो, आपको भगवान ने दिया, you have every right to experience, but even use it for the betterment of the society. When that balance comes, that's when the 8 is living its highest potential. And you, metaphysically speaking, 8 में 2 गोले हैं. So one of them represents your spiritual quotient, one of them represents your material quotient. Wow. Okay. Now, if you are only high on material aspect of it, खाली पैसा चाहिए, भाग रहे हो, खाली पैसा, position, power, then also it will be a struggle, life will be struggle. Or if you are, बस मुझे तो खाली एक गुफा में जाके खाली meditate करना है. If you have a life path 8 and you are saying, I will only be spiritual, when you are not supposed to be at that point in life, then also life will be struggleful. So 8 is all about balancing the material and the spiritual. तो जब भी हम किसी का प्रोमिनेंट नंबर 8 देखते हैं बर्थडे में या लाइफ पाथ में, मैं हमेशा बोलता हूँ जरा 8 नंबर लिख तो पेपर पे. आई जस्ट वांट टू सी is any circle bigger than the other. And I don't tell them that. I just tell them naturally write numbers 1 to 9. And then I'll tell them, let me see how you've written the 8. So I get an idea कि lopsided life है या क्या है. Then you will see that the life has got a lot of struggles. But अगर balanced है, तो खाली growth है. मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं 8 कैसे लिखता हूँ, मैं 1 कैसे लिखता हूँ, मैं 2 कैसे लिखता हूँ आपके कारण. 8 नंबर का कोई प्रचलित मनुष्य बताओ. तो the one that comes to my mind is Bill Gates. All right, if you will see, अगर आप देखोगे तो tech world में he's a giant. Made very very good everything. Started Melinda Gates Foundation. Yeah. So started something to serve humanity. तो वो 8 balance हो गया. Right, somewhere there is a balance. So this is
uh, a very good example of balancing the eight, successful eight number people. Very nice. So this is a myth that I always break when I talk about 4 and 8. ऐसा नहीं है. 4s are amazing at manifestation. वो जिस तरीके से कोई चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है कोई नहीं कर सकता है. 8 is amazing at power and generating wealth. So yeah, they are very powerful numbers provided you use them rightly. अब हम बात करेंगे लाइफ पाथ 9 की. No. So before I speak about the 9, I will give you two examples of life path 9. Probably I won't have to speak about it. One is Mahatma Gandhi, one is Mother Teresa. Oh. Right? So 9 is all about being a humanitarian. अगर आप देखोगे ना numbers 1 से चालू होता है. So as you climb the ladder, you will see the maturity in the energy is also increasing. True. Complexity also increasing, right? So 9 is the last number on our number ladder. So its 9s are also very influential people, but उनका जो भी influence होता है is for a greater good. So someone with a life path 9, they have to be associated with some kind of humanitarian project. Again, I spoke about empathy with the number 2. 9s are the most empathetic people that you will find and extremely generous. बड़े दिल वाले लोग होते हैं. When they actually live the true definition of giving. See, whenever we give, एक मन में तो आशा होती है ना वापस आएगा, या मैंने ये करा है इसके लिए, ये क्या करेगा, or this person owes it to me. 9 will never think that. It's only a one-way street for them. So the true definition of true giving is giving without expectation of getting it back. So that's what the number 9 is all about. दिक्कत एक ही होती है. Anybody with a life path 9, I give them one warning. And the only warning I give them is put your energies, give where people want to receive. Because 9s में क्या होता है ना, people even take them for a ride. They misinterpret their kindness, their generosity और अपना मतलब निकालने को आ जाते हैं. That is where and 9, see, they are very matured energies, right? समझ में सब आता है, but out of kindness, they will not be able to do something. So 9s also deal with a lot of suppressed anger. फिर वो एक दिन aggression में आ जाता है. वो 1 का aggression फिर वो 9 में आ जाता है, right? So 9 is all about generosity, kindness, humanitarian, compassion, empathy. This is all that they are working for the greater good. That is all what 9 is. So even 9 people who are businessmen, they will always have some kind of a trust or a charity that will be sending some proceeds there and doing something good for the world, or donate or something like that. So all that is a life path 9. सो अगर मेरा लाइफ पाथ 1 to 9 के बीच में है और मुझे मेरा पर्पस आज आपसे बात करके समझ आ रहा है और मैं अपने करंट पर्पस से चेंज होके वहां आना चाहता हूँ, तो क्या इसकी भी कुछ रेमेडीज होती हैं क्या? हाँ, रेमेडीज होती है. सबसे बड़ी रेमेडी लाइक आई सेड अवेयरनेस होती है, राइट? लाइफ पाथ नंबर जो है, तो अगर आप किसी को भी मिलोगे ना तो उसका लाइफ पाथ नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो सारी ट्रेड्स उसमें होगी. बट ये नंबर का वाइब्रेशन एक्टिवेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 35. ओके, तो एंड दिस इज व्हाई आई से लाइफ पाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी. जो आपने बोला भागांक पूरे डेट ऑफ बर्थ का होता है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे मिड लाइफ क्राइसिस कब होती है? 40 पे. 35-45 की एज के बीच में होती है मिड लाइफ क्राइसिस. व्हाई इज दैट? बिकॉज वंस यू हैव क्रॉस 35 and you are not in alignment with your life path number, then life will create such events which are trying to actually push you towards your life path. भाई ये छोड़, अभी ये कर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाइफ पाथ 1, वहां से हमने स्टार्ट किया. वो जॉब कर रहा है, मीनियल जॉब कर रहा है कोई कंपनी में. ही इज नाउ क्रॉसिंग 35. और दिस इज नॉट हिज लाइफ पर्पस. तो क्या होगा ना, या तो हिल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, या कंपनी बंद होगी. कुछ ऐसी इवेंट होगी जिससे वो लाइफ बता रहा है अभी बस कर जो कर रहा है वो, मूव ऑन टू समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू इन लाइफ. नाउ द डिफरेंस ओवर देयर इज, एक वो विक्टिम बन जाएगा एंड अरे मेरा जॉब चला गया, अरे मेरा ये हो गया. But let's say if I was consulting that person, I say, this is fantastic what has happened in your life. Now you're supposed to live your soul's purpose. You're supposed to walk your soul's path or walk your true path. That's why this has happened. Wow.
तेरा काम है कुछ खुद का करना, दुनिया को कुछ हिलाना, दुनिया को लाइक लीड करना, ये तेरा काम है, तू क्या कर रहा है? दिस हाउ आई वुड कंसल्ट वाह। myself. सो निशांक, एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो 20 साल डायमंड इंडस्ट्री में काम कर रहा था और अब वो न्यूमरोलॉजी की बातें करता है, तो उसका लाइफ पाथ क्या था? आप मेरी बात कर रहे हो? You studied me well. My life path is a 22. So I spoke about 11 as a master number. Let me talk about 22. So 22s, like the 11s, are again very intuitive. Now 22 has got the outer is 2, the inner is 4. All right. So they amplify the energy of 2. Everything I spoke about 2 and everything I spoke about 4. Now 4s, 22s, I'll give you some examples of 22. Brian Adams is a life path 22. Richard Branson is a life वाह। path 22. Dalai Lama is a life path 22. All these are life path 22. If you see, एक सिंगर है, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है और एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्चुअलाइजर है, राइट? नाउ व्हाट इज 22 ऑल अबाउट? 22 इज ऑल अबाउट, दे आर कॉल्ड, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स हम 11 को बोलते हैं, 22 आर ऑल अबाउट मास्टर बिल्डर्स. बिल्डर वो कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग नहीं, but builders of something very magnanimous on this earth. They are a part of a very big project. Like, for example, Richard Branson की बात करें, he is, what is he doing? Virgin Galactic. उसको नॉर्मल लोगों को स्पेस में लेके जाना है. See the project that he is working on. That's a 22. They are either leading or they are part of such huge projects, which are a big challenge that normal human can do it. Okay, so they are also, they're master builders, amazing at manifestation. They have the diplomacy of the 2 and they have the structured approach of a 4, strength of a 4. तो ये दोनों को जब कंबाइन करो, एंड ऑल मास्टर नंबर्स आर स्पिरिचुअल, सो दे इवन बिकम मास्टर टीचर्स, दे आर ग्रेट टीचर्स. सो अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे और आप देखोगे मेरी कंसल्टिंग की फीस क्या है, और अगर आप लर्न न्यूमरोलॉजी पे जाओगे और मेरे कोर्स की फीस देखोगे ना, तो कंसल्टिंग फीस विल, यू विल फाइंड देम वेरी हाई. आई हैव पर्पसली केप्ट इट. आई एम मोर इंस्पायर्ड टू टीच पीपल. आप सीख लो, इट्स अ स्किल. डोंट डू इट फॉर एनीबडी एल्स इफ यू डोंट वांट टू डू इट, बट इवन इफ यू विल नो योरसेल्फ बेटर, आप आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को भी जान गए बराबर से, you are done, your game in life. So I love to teach. Talking about the transition, 20 years in diamonds. अभी कोई जिसको भी मैं बोलता हूँ बोलता है यार डायमंड से ये कर रहा है तू. I'm like, हाँ यार ये कर रहा हूँ. And in my workplace also, those who knew that I am doing this, I left my job in 2021. So ये मैं 2017 में सीखा. And those who knew that I was doing this, they used to all call me all sorts of names. अरे पंडित, आचार्य, ऐसा ऐसा मुझे बोला. I used to listen to it. It's okay. Again, ये image है numerologist की, वो ऐसा typical image is there. I would listen to it. But I knew for one thing कि बात में दम है. And this can transform people's lives. This can change people's lives. 20 years में, like I started my career in 2000, and 2011, 11 years into a career, something happened at the workplace which led, I'm not getting into that story, but which led me to a complete state of burnout. Okay, it was a 6-month period at work where we were working 7 days a week, no Sundays off. We were working 12 hours a day. It was a particular project that we had taken up, very, very challenging. And I would leave home at 8. I would come home at 8:39 in the night. और मुझे घर पे आके सोचना पड़ रहा था, वाइफ को टाइम दूँ, माँ बाप को टाइम दूँ, बच्चों का टाइम दूँ, किसको टाइम दूँ? टाइम इतना ही है. और खुद का टाइम तो फिर वो सोच भी नहीं सकते हम. माई मदर वॉज एलिंग, शी हैड अ स्ट्रोक, शी वॉज बेड रिडन, सो उनको भी टाइम देना पड़े. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू थिंकिंग दैट यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है लाइफ में. And also what had happened is that it was the most successful year of my life, commercially successful, good increment, good bonus, and great. Like अगर आप, मैं आपको खाली वो साल के बारे में बताऊंगा तो आप बोलेंगे यार यू आर लिविंग द लाइफ. फिर क्या प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये, व्हेन आई वेंट डीपर इनटू द इंक्वायरी, आई रियलाइज्ड कि लाइफ में कुछ पर्पस नहीं मिल रहा है. दिस वाज द एज ऑफ 31. या आई वाज लाइक यार डायमंड बना रहे कर रहे, लेकिन क्या, what purpose is this, sir? And the kind of stress,
that we are taking to make the perfect diamond. Who even cares? ये रिंग में आपने बिठा लिया डायमंड को, आपको क्या फर्क पड़ता है वो हार्ट एंड एरो है, वो ट्रिपल एक्स है, वो क्या है, आपको क्या फर्क पड़ता है? You can't even see it, right? But I know the amount of stress we would put into making the perfect diamond, and I was wondering, where is this going? Whose purpose is getting solved? What higher purpose is getting solved over here? And the answer, and I used to sleep dissatisfied every night. यार कुछ तो नहीं है, कुछ तो बराबर नहीं है, कुछ तो बराबर नहीं, but I didn't know what. And I started having problems with everyone around me. I had a problem with my family, I had a problem with my boss, I had a problem with the job, I had a problem with everything. The only motivation was salary. 1 तारीख को सैलरी आएगी, फिर हम बिल्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, वापस 1 महीना काम करेंगे, फिर आएगी सैलरी, घूमने जाएंगे. यार कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं. गलत है, कुछ तो ठीक नहीं है, बट क्या है पता नहीं था. एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, एंड इन फ्रस्ट्रेशन वन डे आई सेड, ओके, आई एम क्विटिंग माय जॉब. आई वेंट इनटू माय बॉस's cabin and I just wished him good morning and I came up. Again sat down in my cabin, frustrated with myself. क्या है यार, जॉब नहीं छोड़ सकता है तू? And there was an inner voice inside that said, boss, problem बाहर नहीं है, problem अंदर है. And I didn't know what that meant at that time. I was like, what do you mean अंदर है? मतलब मैं problem हूँ, दुनिया देख पूरा ये है. नहीं, problem अंदर है, problem अंदर. That was that tiny voice. And then I said, okay यार, if the problem is inside, show me. And the rest is history. Then I read the right books. Right books came into my life. I met the right people. I met my mentor in 2017. After 6 years, I met my mentor. This book has played a very big role in that transition. I met my mentor. Then I really understood that हाँ, ये कुछ तो अभी करना पड़ेगा लाइफ में, जहाँ पे एक हायर पर्पस रिजॉल्व हो रहा. That's the story. तो आपके न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के बाद आपने अपने कभी पेरेंट्स से पूछा कि आपने मेरा नाम निशांक क्यों रखा? बिकॉज अगर आप निशांक देखोगे तो वो संधि विच्छेद जिसको हम कहते हैं करे, तो निशा यानी अर्थ, निशा यानी रात, और अंक यानी नंबर्स, कि एक रात के बाद नंबर आएंगे आपके पास. सच बोलूं पंकज जी, जी, आपने जैसे ये मेरे नाम के बारे में बताया, मैंने खुद ऐसे कभी सोचा नहीं है. क्या बात कर रहे हो? नहीं, बट दिस इज ट्रू. निशांक ये- इज निशा यानी अर्थ, Yeah. निशा यानी रात, और अंक यानी नंबर्स. तो आपका तो डेस्टिनी ही ये था कि आपको नंबरों में आना है. Yeah, maybe that's so. And the journey into numbers, I was dealing with a lot of nonsense. I was very close to clinical depression, and I was working with a healer, energy healer, and very intuitive lady again. And she told me, "यार, I can see something around numbers for you." और मन में मैं बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी मत बोलना, न्यूमरोलॉजी मत बोलना, होकी पोकी है, नॉनसेंस है, सब मतलब इट्स अ होक्स. And in my head, I was like, don't. And she said, why don't you attempt at learning numerology? Somehow you should. I said, यार क्या पागल हो गई है? I was like, नहीं है ये सब, many. And but out of deep love and respect for her, she helped me heal at a very high, good extent. I was like, okay, you know. She said, I will find you the teacher. I will find everything. But do something. So out of love and respect, I was like, okay, चल यार देखते क्या है. और ये वो डबल के का कुछ तो सुलझे निकलेगा. तब मुझे पता चला कि नाम से भी नंबर आते हैं. लाइक एवरी लेटर ऑफ माय नेम, सो निशांक इन संस्कृत टर्म्स मींस फियरलेस. ओह, ओके, विदाउट अ डाउट. शंक, विदाउट अ शंका. हाँ, बिल्कुल. विदाउट डाउट, फियरलेस. बट व्हेन आई डिड न्यूमरोलॉजी, आई रियलाइज्ड कि ये मसला है. And now what we spoke about, that when I was speaking about Loshu grid, and you said that, oh, even name matters. So here's the thing, आपके बर्थ के नंबर्स और आपके नेम के नंबर्स वो अलाइंड होने चाहिए. तो अगर मैं आपको एनालॉजी दूं तो लाइफ पाथ नंबर है ना, इट्स लाइक कार दैट गॉड हैज गिवन यू. योर बर्थडे नंबर इज द एक्सेसरीज दैट कम विद द कार. इट्स द गिफ्ट दैट यू हैव. 11 is your gift, 6 is the car given to you. Now your name number is your driver. तो अगर भगवान ने आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी दी है, तो उसका ड्राइवर वो गाड़ी को जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होता तो है. बहुत ही मजेदार है लॉजिक. फटाफट गेम खेलते हैं. हाँ जी. मैं एक नंबर बोलूंगा, आप मुझे ये बताओ कि इस नंबर के साथ कौन सी गाड़ी है. ठीक है, और मुझे जानना है कि लंबोर्गिनी कौन सी है 1 to 9 के बीच में. ओके. तो नंबर 1. 1 is a sports car. 2. भागना है. Two. और 2 is
a coupe. दो जन. It's all about relationships. It's all about accommodation. So 2 is coupe. 3. 3 is वो convertible गाड़ी होती है ना. Enjoy life. That's 3. 4. 4 is a truck. A 5. heavy vehicle. 5 is convertible का भी fancier version. 6. 5 also I will relate to a Uber. Constant change. अलग 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 प्रवासी बैठ रहे हैं. 5 love change. 6 is a family car. वो 6 सीटर जो होती है ना पूरी फैमिली बैठ सकती है. 6 is all about responsibility and family. 7. 7 is cycle. Loner. 7 loner होता है. उसको खुद में ही बहुत मजा आता है. Eight. कोई नहीं चाहिए. 8. 8 is a Rolls Royce. Wow. Opulence. 9. तो आपने Lamborghini बोला था ना. जी. So it's not about the brand or the cost of the car. Lamborghini, when I said 1 में sports car is about zooming ahead, 8 is about opulence. मैं कोई हूँ. Making a statement. So that's Rolls Royce. 9. 9 is a bus. Oh. सबको साथ लेके चलेंगे. And now I can. डबल डेकर बस. अरे वाह, जो सिर्फ मुंबई में मिलने वाली है मुझे इस समय. और लंदन में. और दुबई में भी एक्चुअली. अच्छा दुबई में. दुबई में भी आपको डबल डेकर बस मिल जाएगी. तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके निशांक. और आज जेन्युइनली मुझे लगता है कि जो भी लोग इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर बैठकर वो मूलांक 2 मूलांक 3 वाली रील्स देख रहे हैं ना, शायद इस एपिसोड के बाद वो अपने लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर वाली रील्स आपके और मेरी देखा करें. Absolutely. And I really trust that this creates a lot of awareness and people start questioning that, oh, am I aligned to my life path? And all your listeners, everyone who is listening to this, I trust that they will make the transformative changes that they can. So transformation is a key for a happy life and change is the only constant. So if you are not aligned to your life path, you will always feel confused and struggle in life. To find your life path number and to know more about Nishank and his theories, check our first pinned comment over here and do let me know, are you aligned to your life path number? Thank you for watching Project Life with Simply Pankaj.